अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे. Today our lecture is about dipole moment. First of all, we'll discuss about the what is meant by dipole moment. First of all, we'll discuss about the dipole moment. Yeah, how dipole moment is recognized in the molecule. First of all, we know the definition of dipole moment. Here is a Q positive charge. Here is a Q negative charge. There are two charges, Q positive and Q negative, and distance between them is R. Then the dipole moment is represented by mu. Mu is equals to Q positive, Q negative into R. Means to say that the product of charges and distance between them, product of charges and distance between them is known as dipole moment. So we can write the definition: product of charges and distance between them is known as dipole moment. As you know, that is the charges, there are the charges, and there that is a distance between them. That that this is our distance between the charges. I hope so you can clear the definition of dipole moment. And furthermore, we will discuss the unit of dipole moment. Unit of dipole moment is dpi and meter coulomb. There are the two units in which dipole moment, we can write a dipole moment: coulomb, meter coulomb, and dpi. We must know the relationship between 1 dpi and meter coulomb, that is equals to 1 dpi is equals to 3.336 into 10 raised power minus 30 meter coulomb. It means 1 dpi contains 3.336 into 10 raised power minus 30 meter coulomb. This relation can help to find out to convert the meter coulomb into dpi. Remember that whenever the unit of dipole moment is meter coulomb, it must be converted into dpi. That relation is used in the conversion of meter coulomb into dpi. That is 1 dpi is equal to 3.336 into 10 raised power minus 30 meter coulomb. Furthermore, we can look the further area of dipole moment. There, there is applications of dipole moment. Application of dipole moment, we can write the application of dipole moment. Here we will discuss the application of dipole moment. Before discussing it, it must be known to you. It must be known to you the direction of dipole moment is positive to negative charge. Its direction, here we can write the direction of dipole moment. Here we can write the direction of dipole moment
that is from positive charge to negative charge. Direction of dipole moment is from positive to negative charge. Positive to negative charge. Here we can discuss application of dipole moment. First of all, we discuss first application of dipole moment is polarity in the molecule. First of all, how we can find a polarity in the molecule? First of all, we'll discuss about the polarity in a molecule. Here, in a factor of polarity, there are the two main points. Number one is polar molecule, and number two is non-polar molecule. First of all, we'll discuss the polar molecule. With the example, we'll discuss about it. According to Federboard paper, the syllabus of Federboard and final paper of Federboard, that question repeatedly in the repeatedly seen in the Federboard paper. That is how you can determine that water is a polar molecule. How can you determine the water is a polar molecule? Water is a polar molecule. Here the direction of dipole moment is positive to negative, and the resultant vector shows the value of dipole moment is 1.85 divided. If any molecule has some value of dipole moment, that must be in polar nature. That must be in polar nature. Then we'll discuss the second example of polarity, that is a chlorobenzene. Chlorobenzene has chlorine has partial negative charge and carbon has partial positive charge on it. But here the direction of a dipole moment is positive to negative, so that resultant vector is known, so that its dipole moment value is 0.12 divided. Here we can conclude the chlorobenzene and water molecule is a polar molecule because they both the value of dipole moment due to resultant vector. So that we can say that a polar molecule has a dipole moment of some value that must be considered in polar molecule. Then we would further discuss about the non-polar molecule. Non-polar molecule. How you can recognize a non-polar molecule according to dipole moment. First of all, we give some example. According to example, first example is carbon dioxide. Here, in the structure of carbon dioxide, oxygen, oxygen has partial negative charge, and ultimately carbon has partial positive charge on it. Then
the direction of dipole moment is positive to negative. Both the vector of dipole moment is opposite in direction, so that dipole moment is equal to 0. Carbon dioxide has a dipole moment is 0, so that carbon dioxide is a non-polar molecule. Then the other example, we can replace oxygen with sulfur. Here we draw the structure of carbon sulfide, disulfide. The direction of dipole moment is positive to negative and positive to negative. Both the vector of dipole moment in opposite in direction, so that their dipole moment, its dipole moment value is 0. Whenever you can recognize the non-polar molecule, its dipole moment, it has mass dipole moment is equal to 0. I think so. You can clear that point. Next application is stereoisomers. Stereoisomers. First of all, we'll discuss about the stereoisomers. Stereoisomers are those isomers which have same molecular formula but different arrangement of atom in the space. Space in the space, there are the different arrangement of atom in the space. For example, with the example, we can recognize that point. Here, carbon has double bond, chlorine, both chlorine atom in the same side, hydrogen in the same side. There is a one isomer and there is another isomer. Chlorine has different position in the structure of that molecule. Both molecule has naming according to IUPAC 1 and 2. Here 1 at carbon 1 chlorine is present and carbon 2 also chlorine is present, so that we can write the IUPAC name of that compound 1,2 dichloroethene. These are two carbon that have a double bond, so named as ethene 1 and 2. There are the two Cl which are placed in carbon 1 and carbon 2. Here its name is 1,2 dichloroethene. Both molecules have same IUPAC naming but difference in structure. So whenever the same atom placed at the same place, at the same side, that is a cis form. Whenever the same atoms are attached with carbon atom having double bond, alternating positions, when same atoms are present in alternating position, that must written as transform. Here, the dipole moment, how dipole moment recognize the cis and transform. So, chlorine has partial negative charge, carbon has partial positive charge due to highly electronegative. Chlorine has negative charge. Ultimately, carbon has positive charge, but dipole moment, direction of dipole moment is positive to negative. Here, the direction of dipole moment is positive to negative. So, the direction of both vectors are in same direction.
So resultant vector can indicate the dipole moment is 1.89 dBi. Here we can conclude cis in a cis form dipole moment has some value. Whenever we consider the molecule in cis form, its dipole moment value, it has must some value of dipole moment. So we check the compound exists in a transform. How you can check partial negative charge on a chlorine, partial positive charge on a carbon atom. Carbon atom has partial positive charge, chlorine has partial negative charge on it. Here the direction of dipole moment is positive to negative, positive to negative. So both vector has opposite in direction. So in a transform, dipole moment is equal to 0 according to rules. Whenever the molecule in a transform, the dipole moment, value of dipole moment must be 0. I think you can clear that point. In a cis form, dipole moment has some value, but transform dipole moment has 0 value. Next, we can move on third application. Third application is calculate the ionic character of covalent compound. In a covalent compound, some ionic character is present due to electronegative difference that must be calculated from the dipole moment value. Percentage ionic, here is the formula to calculate percentage ionic mu observe. Our mu ionic into 100 is the formula to calculate the ionic factor mu observe our mu ionic into 100. Whenever we detect in the statement of mu observe must be given. In every statement, mu observe is must be given in a statement. Di- Dipole value of dipole moment must be given in statement mu observed, and mu ionic will be find out with the formula of q into r, charge into distance. I think so. You can clear all the points in this lecture. No, we discuss in Urdu language. अब यहाँ पे बेटा हम देखते हैं कि डाइपोल मूवमेंट के प्रोडक्ट इस मल्टीप्लाई को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम. इस मल्टीप्लाई को कहते हैं प्रोडक्ट और इन दोनों को कहते हैं चार्जेस. अब इस फॉर्मूले से हमें डेफिनेशन का अंदाज़ा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट की दो वैल्यू है, डिबाई और मीटर कूलम. और 1 डिबाई किसके इक्वल है? 3.336 इंटू 10⁻30 मीटर कूलम इसके इक्वल होता है. ये वैल्यू हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि मीटर कूलम को हम डिबाई में कन्वर्ट कर सकें. अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट. पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल. पोलैरिटी पहला फैक्टर. पोलैरिटी के अंदर दो चीज़ें आती, पोलर एंड नॉन पोलर. पोलर में पोलर मॉलिक्यूल बेटा ये फैक्टर बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि वाटर और क्लोरोबेंजीन, वाटर और क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन और वाटर दोनों हमारे पास कैसे क्लोरो
बेंजीन, दोनों कैसे हमारे पास पोलर इन नेचर है। आप देख लें जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एक सेम डायरेक्शन में वेक्टर फ्लो कर रहे हैं, तो एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा जिसकी वजह से डाइपोल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी वाटर की। जैसे बेंजीन में देखें तो ये कार्बन होते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। So the resultant vector shows the value of dipole moment, that is equals to mu is equals to 0.1812 divide। देन हम देखते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की अगर स्ट्रक्चर हम ओपन करें, दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो आएगी। तो नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी हमेशा, और पोलर में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। दैट इसलिए हम कहते हैं दैट्स वाई कि वाटर और क्लोरोबेंजीन पोलर है, और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड गैस ये नॉन पोलर। अब दूसरी एप्लीकेशन है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में हम देखें सिस और ट्रांसफॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेमिंग आनी चाहिए इन कंपाउंड है। कार्बन नंबर 1 पे भी Cl और कार्बन नंबर 2 पे भी Cl है, दो Cl है। 1 2 डाइक्लोरो, दो के लिए डाई हम वर्ड यूज करते हैं, डाइक्लोरो, दो कार्बन में डबल बॉन्ड है, इथीन होगा। अब बेटा दूसरी है 1 2, दोनों पे 1 2 है, तो इसका होगा 1 2 डाइक्लोरोइथीन होगा। बट देखें तो एक स्ट्रक्चर में क्लोरीन सेम साइड पे, एक स्ट्रक्चर में अल्टरनेटिंग पोजीशन पे क्लोरीन। अगर सेम क्लोरीन सेम साइड पे हो उसे कहते हैं सिस फॉर्म, और अगर अल्टरनेटिंग पोजीशन पे इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म। क्लियर। और सिस फॉर्म में आप पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपका कार्बन पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, वेक्टर दोनों सेम साइड पे फ्लो करेंगे। इसी रिजल्टेंट वेक्टर शो कर रहा है कि डाइपोल मूवमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू 1.89। और देन अगर हम ट्रांसफॉर्म को देखें तो दोनों रिजल्टेंट सॉरी वेक्टर अपोजिट इन डायरेक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होगी। और ये ट्रांसफॉर्म में हमेशा जीरो वैल्यू होती है डाइपोल मोमेंट की, और सिस फॉर्म में हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, इसलिए हम उसे सिस कहते हैं और दूसरे को ट्रांस कहते हैं। अब देखें कैलकुलेट आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक कैरेक्टर कोवलेंट बॉन्ड में होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इसका स्पेशलाइज फार्मूला है म्यू ऑब्जर्व ओवर म्यू आयनिक इनटू 100। म्यू ऑब्जर्व के म्यू ऑब्जर्व हमेशा स्टेटमेंट में हमें गिवन होगा, और म्यू आयनिक हमने फाइंड करना होता है, और म्यू आयनिक का फार्मूला होता है क्यू इंटू वा। अक्सर यहाँ पे क्यू की वैल्यू नहीं गिवन होती, क्यू की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है, वो कितनी होती 1.02 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतनी क्यू की वैल्यू होगी। और डिस्टेंस कभी एंगस्ट्रम में दिया होगा, आपको पता है अगर एंगस्ट्रम में दिया हो 1 एंगस्ट्रम कैसे इक्वल होते हैं 10⁻⁻10 मीटर के। अगर डिस्टेंस आपका पिकोमीटर में दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू दी हुई है पिकोमीटर के साथ, तो याद रखें कि होगा 10⁻⁻12 मीटर। मतलब कोई भी वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपने साथ में लगानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू आर फाइंड करेंगे, डाइपोल आयनिक फाइंड हो जाएगा म्यू आयनिक। अब म्यू आयनिक मीटर कूलम में फाइंड होगा, मीटर कूलम से हम डिबाई में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, वो 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻30 मीटर कूलम आता है।
मीटर कूलम को कन्वर्ट करेंगे डिबाई में, और डिबाई जो न्यू आयनिक डिबाई में आएगा वो यहाँ पे आपने इस फार्मूले में पुट करनी, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। इससे रिलेटेड फार्मूलाज भी इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर बेटा पेपर में आते हैं फेडरल बोर्ड में। इस दफ़ा ये आए थे पोलर, नॉन पोलर, सिस्ट और ट्रांसफॉर्म। बट अगली दफ़ा चांस है कि आपके पास मैरिकल डाइपोल मूवमेंट का आ जाए। डाइपोल मूवमेंट के एक तो एग्जांपल में एच एफ का मैरिकल है, और आपके एमसीक्यू नंबर 6 में पी न्यूमेरिकल है इसका डाइपोल मूवमेंट का। और क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इससे रिलेटेड आपकी एग्जांपल है, वो आपने सॉल्व करनी नहीं होती तो मुझे बताना है ऑनलाइन। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, देन एमसीक्यू नंबर 6 है शायद, एमसीक्यू नंबर 6। ये तीनों सेम टू सेम मेथड के ऊपर सॉल्व होंगे ये तीनों क्वेश्चन, तो ये लाजमी आपने कर लेने। आई होप सो आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।